हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट से 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज को देखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज बैंकिंग? बैंकिंग क्या है? गिव द मेन फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। कमर्शियल बैंकिंग का मेन फ्यूचर बताना है। तो आंसर हो जाएगा, पहले बैंकिंग क्या है, तो बैंकिंग इज डिफाइंड एज द एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिटेड मनी बाय द पब्लिक, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विथड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज। इसके बाद हमें मेन फ्यूचर्स लिखना था कमर्शियल बैंकिंग का, तो इसमें आंसर हो जाएगा मेन फ्यूचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर एज फॉलोज। नंबर 1 है, इट डील्स विथ मनी, इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड एडवांसेज लोन्स। इसके बाद आगे हम देखते हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इट ऑल्सो डील्स विथ क्रेडिट, इट हैज द पावर टू क्रिएट क्रेडिट। नंबर 3 है, इट इज ए कमर्शियल इंस्टीट्यूशन whose aim is to earn profit. Number 4 है, it is a unique financial institution that creates demand. और नंबर 5 है, it deals with the general public. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे 2 है, banks are present everywhere but it is very difficult for poor households to get loan from the bank than taking a loan from informal source. Why is it so? तो आंसर इसका हो जाएगा, बैंक आर प्रेजेंट एवरीवेयर but it is very difficult for poor households to get loan from the bank than taking a loan from informal source. Poor household give preference to informal sources of credit because bank loans require proper documentation and collateral, which is rarely available with poor households, and it prevents them from getting loans. Sometimes banks hesitate to give loans to poor households. On the other hand, informal sources of credit like money lenders personally know the borrowers and willing to give loans without collateral. The documentation process of money lenders is not very rigid. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 3 देखते हैं। 3 नंबर है, why do lenders ask for collateral while lending? तो आंसर हो जाएगा, lenders asked for collateral while lending money to the borrowers due to the following reason. Number 1 है, lenders demand collateral against loan because it is a security against loan. Number B है, collateral is an asset that the borrower owns and uses this as a guarantee to lender until the loan repaid. Next है C number, if the borrower fails to repay the loan, the lender has to right to sell the asset or collateral to obtain payment. और D number है, property such as land titles, deposits with bank, livestock, gold are some common examples of collateral. Next question number आगे 4 है, how will you justify the credit is a crucial element in economic life? तो आंसर हो जाएगा, credit plays a crucial role in economic life. Sometimes it plays a negative role, sometimes positive. तो सबसे पहले हम पॉजिटिव रोल को देखेंगे। तो नंबर 1 है, sometimes credit helps to increase earnings, makes the person better than before. Number 2 है, credit helps the person to enhance his business, his economic condition. इसके बाद नेगेटिव रोल है नंबर 1, sometimes person borrow money to increase his business or for personal use. Number 2 है, if the borrower fails to pay back the borrowed money, it pushes the person in a bank trap. To repay the loan, the borrower has to sell his land or the lender detain the collateral. Next question number आगे 5 है, for what purpose banks keeps a small portion of the deposits as cash with themselves? तो आंसर हो जाएगा नंबर 1 है, banks keeps only a small proportion of their deposits as cash with themselves. Number 2 है, banks in India these days hold 15% of their cash deposits as cash. Number 3 है, this is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. Next है 4 number, since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर है, एक्सप्लेन द इंटरमीडियरी फंक्शन ऑफ मनी। इंटरमीडियरी फंक्शन ऑफ मनी का एक्सप्लेन करना है
इलोबरेट विथ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के साथ इलोबरेट करना है। तो आंसर हो जाएगा मनी बाई प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप्स eliminates the need for double coincidence of wants. It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and at the same time sell him wheat. All he has to do is find a buyer for his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called a medium of exchange. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर है व्हाट मोटिव्स आर देयर टू डिपॉजिट मनी द बैंक बाय डिपॉजिटर्स। तो आंसर हो जाएगा नंबर 1 पॉइंट है मनी इन बैंक्स इज सेफ, नंबर 2 है डिपॉजिटर गेट्स इंटरेस्ट ऑन इट, और नंबर 3 है पीपुल ऑल्सो पे प्रोविजन टू विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर है how will you justify that interest on loans is a main source of income of the banks? तो आंसर हो जाएगा banks mediate between those who have surplus funds and those who are in need of these funds. It means that a bank mediates between borrowers and depositors. Banks charges very high interest rate on loans than what they offer to the depositors. The difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositors in their main source of income. These days, banks started so many schemes just to attract the borrowers. Bank offer loans at attractive interest rate. The main motive behind all these steps of banks is to earn huge profits. Next question आगे है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर है how far it is correct to say that the modern currency is without any use of its own as a commodity? Give reason to your support your answer। तो आंसर हो जाएगा, हम लोग आंसर यहां से देख लेते हैं। ए नंबर है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। बी है अनलाइक द थिंग्स दैट वेयर यूज्ड एज मनी अर्लियर, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper, and unlike grain and cattle they are neither of everyday use। और सी है the modern currency is merely a paper currency and it is accepted a medium of exchange because it is authorized by the government of the country is without any use of its own।